ओके, स्टूडेंट आए हो रहा है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो हम अभी तक ये कह रहे थे, तो हम इसका सर 3 आएगा। हाँ, हम प्रूव करने वाले हैं व्हाट। ओके, तो मैं कह रहा था हम प्रूव करने वाले थे LP स्टार इज इक्वल टू LQ where P is greater than equal to 1 is less than infinity, and of course 1 by P plus 1 by Q is equal to 1. ये हम प्रूव करने वाले हैं। चलो लेट मी राइट इट एज अ थ्योरम। सो अगर मैं लूं, अगर P को मैं लेता हूं, क्या मैंने लिया था 3, so you have 1 by P plus 1 by Q is equal to 1. That means इसका 3 और आगे। ओके, तो that would be 1 by Q is equal to 1 minus 1 by 3, that's equal to 2 by 3, which means that Q is equal to 3 by 2, right? So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ L3 स्टार। हाँ, L3 का जो स्टार है वो है L3 by 2। L3 by 2, simply because 1 by 3 plus 2 by 3 is equal to 1. तो सिमिलरली L3 by 2 का स्टार भी उसी हिसाब से हो जाएगा L3, राइट? हाँ। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। सो लेट्स डू द, इसी तरह से डिफरेंट नंबर्स के लिए इसी तरह से होता रहेगा। सो अब एक ही चीज का ध्यान रखना है, ऑल दीज P and Qs हैव टू बी ग्रेटर देन, है ना, ये कंडीशन रहनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? तो ये कंडीशन रहनी चाहिए कि P शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम नहीं ले सकते P को से 1.5, ठीक है ना, बिकॉज देन पहले तो ये नॉर्मल लीनियर स्पेस ही नहीं है, तो उसकी वजह से। सो नेक्स्ट मतलब हमारा आइडिया इसमें भी वही होगा जो हमने इससे पहले किया, वो ये प्रूफ। नाउ summation k runs from 1 to infinity is a Schauder basis। चलो मैं लिखता हूँ वायर, जो हम कल कर चुके हैं, ek is equal to 0 0 so on and so forth, 0 1 0 so on and so forth, 1 is at the kth place, वहां मैंने ith किया था, but doesn't matter। okay, is a Schauder basis for LP P greater than equal to 1, यही ना, जो 1 less than equal to P less than infinity। So therefore for every x belonging to LP there exists a sequence of scalars। मैं सीधे में लिखता हूँ ऐसे, for every x equal to x1 x2 so on and so forth belonging to L sub P, we can write x is equal to summation xk ek k runs from 1 to infinity। ये कल का ही है, जो बिल्कुल वही तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे। Now let f belong to LP star, it implies then f of then लिखता हूँ, then f of x is equal to f of summation xk ek k runs from 1 to infinity। और कल मैंने कहा था क्योंकि ये लीनियर एंड कंटिन्यूअस है, ये बन जाएगा summation k runs from 1 to n x sub k f of p k, जिसको मैं लिखूंगा summation k runs from 1 to infinity x k y k, where y k is equal to f of e k is a scalar
यहाँ लिखेंगे f is linear and continuous, तभी हम ये सम बाहर निकाल सकते हैं। तो इट्स अ स्केलर, इट्स यूनिकली डिटरमिन्ड बाय f। जैसा कि हमने कल किया था, वी राइट, चलो पहले हम ऐसे लिखते हैं, जैसा कि हमने कल लिया था, वी राइट f एज f sub y, ठीक है ना। सो वी हैव f sub y of x is equal to summation xk yk. K runs from 1 to k runs from 1 to infinity, and of course y is equal to y1 y2 so on so forth. अब हम दिखाएंगे y जो है वो LQ में बिलोंग करेगा, जैसे कि हमने दिखाया था वहां पे y L infinity में बिलोंग करेगा। सो उसके लिए थोड़ा सा काम चाहिए हमें, राइट। लेट्स कॉल दिस वन, यहाँ पे x बराबर है, ये क्या हो रहा है, x1 x2, it belongs to LP. We will show that this y then must belong to LQ. इसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, क्योंकि हमें दिखाना अभी pth power sum है, qth power sum। Define x sub n to be xkn, where we define, मतलब this is this sequence of sequences जो इससे पहले हमने किया था, यानी xkn is defined to be mod of yk raised to power q divided by yk if k is less than equal to n and yk is not equal to 0. It is equal to 0 if either k is greater than n or yk is equal to 0. यानी अगर yk 0 है तो ये मतलब दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, हमारे कहने का मतलब है पहली सीक्वेंस जो मेरी है, नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, आई ऑलरेडी हैव अ सीक्वेंस yk, है ना, मेरे पास एक yk है, ठीक है ना, मेरे पास सीक्वेंस है y1 y2 so on so forth। इसकी मदद से मैं सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस डिफाइन करूँ, मतलब ये है रफ। तो y1 y2 एक सीक्वेंस है, yi's आर स्केलर्स या yk's आर स्केलर्स। सो इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा, अच्छा अगर ये सपोज ये 0 है, लेट मी राइट इट, x1 है, x1 जो है दैट इज डिफाइंड एज, पहले मैं देखूंगा ये x1, यानी जो मेरा n है वो 1 है ना, यहाँ इसमें n अगर 1 है तो इसकी टर्म्स ये होगी कि नहीं, अगर पहली टर्म यहाँ पे 0 है, अगर पहली टर्म यहाँ पे 0 है तो ये आएगा 0 0 0। सपोज अगर 0 नहीं है, इफ y1 इज 0, अगर y1 0 नहीं है देन ये है y1 डिवाइडेड बाय रेज टू पावर मॉड q, मॉड रेज पावर q डिवाइडेड बाय y1, उसके बाद 0 0, ठीक है, इफ y1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से अब मैं सोच, मतलब ये तुम समझते होगे, अगर वो 0 है तो 0, तो इसी तरह से x2 जो बनेगा, x2 मेरा है y1 रेज टू पावर q डिवाइडेड बाय y1, कॉमा y2 रेज टू पावर q डिवाइडेड बाय y2, उसके बाद 0 0 0। इसी तरह से x3 भी ऐसे ही डिफाइंड है, लेकिन अब इसमें एक ही कंडीशन है, अगर ये 0 होगा तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने कहा था ना, अगर ये 0 है, मतलब ये है ना मेरी सीक्वेंस, इसमें से कुछ टर्म 0 हो सकती है, कुड बी एनी सीक्वेंस, है ना। तो अगर 0 है तो हम उसको 0 ही रखेंगे, अगर नहीं है तो उसका ये स्केलर, मतलब पहली टर्म जो हमारी सीक्वेंस की है उसमें इसकी पहली नॉन 0 टर्म आएगी, बाकी सारी 0, दूसरी टर्म में आएगी 2 टर्म्स, बाकी 0, तीसरी में सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मेरी ये सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन, बिकॉज k ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए ये 0 ही होगा इन एनी केस। यहाँ तो ये 0 ही 0 है, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इससे पहले वाला 0 है कि नॉन 0, वो इस पे डिपेंड करेगा, यहाँ जो ओरिजिनल वॉइस सीक्वेंस है उसमें कौन सी वो टर्म नॉन 0 है, कौन सी 0 है। नाउ क्लियरली
नाउ दिस इज अ फाइनाइट सम, है ना, ये जो एक्स एन है इसमें ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, तो क्लियरली मैं कह सकता हूं एक्स एन जो है इसकी टर्म्स हमेशा फाइनाइट है, तो देयरफॉर इट वुड बी समेबल। तो एक्स एन जो है इट वुड बी कंटेन्ड इनसाइड एलपी, है ना, because they would be p to power summable because it's a finite sum is always summable, क्योंकि इसमें बाकी जो इन्फिनिट सम था ना जिसको हमें देखना था कन्वर्जेंस है कि नहीं, वो तो देखना ही नहीं क्योंकि वो तो जीरो ही आएगा, इसमें तो n से ज्यादा टर्म्स है ही नहीं। देन सो आई कैन इवेलुएट व्हाट, अब मैं इसका इवेलुएट कर सकता हूं, देखो x1 में कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म, x2 में कितनी टर्म्स हैं, टू टर्म, xn में कितनी टर्म्स दो आएंगी, n एन टर्म्स, उसके बाद जीरो जीरो, उससे भी कम आ सकती है, मैं कह रहा हूँ एटमोस्ट n टर्म, इसमें एटमोस्ट वन टर्म आएगी, मतलब नॉन जीरो टर्म, सारी की सारी भी जीरो आ सकती हैं अगर पहली टर्म इस सीक्वेंस की जीरो, लेकिन अब मैं मान सकता हूँ एक्स एन में मैक्सिमम एन टर्म्स हैं। तो अगर ये एलपी में है तो आई कैन अप्लाई, क्योंकि एफ वाई जो है एफ वाई इज अ मैप फ्रॉम एलपी टू के दैट इज लीनियर एंड कंटिन्यूअस, सो आई कैन अप्लाई, सो एफ वाई ऑफ एक्स एन किसके बराबर होगा, by my definition this should be summation k runs from 1 to infinity एक्स के एन, इसकी जो एन टर्म्स है यहाँ पे एक्स एन की एन इंटू वाई के, लेकिन इसको मैंने जैसे चूज किया है इसमें तो खाली एन टर्म्स है, इट शुड बी सिंपली समेशन के रन्स फ्रॉम 1 टू एन, और यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑफ वाई सब के रेज टू पावर क्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वाई, नहीं डिवाइडेड बाय वाई के मल्टीप्लाइड बाय वाई के, मैं एक्स एन के को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज जस्ट समेशन के रन्स फ्रॉम 1 टू एन मॉडुलस ऑफ वाई के रेज टू पावर क्यू। तो अब यहाँ हमने एक स्टेप, यही है इसमें मेन, बाकी तो वैसे ही फॉलो होगा जैसे L1 का डोल दिखाया था। सो आई हैव एफ वाई ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू समेशन के रन्स फ्रॉम 1 टू n, आई हैव मॉडुलस ऑफ वाई के रेज टू पावर q, ठीक है, राइट, therefore for all n greater than equal to 1, because this is a sequence, now this is for, okay, mod of fy of xn, और चूंकि ये नॉन नेगेटिव है it is the same thing as fy of xn which would be less than equal to, because it's a bounded linear functional, norm of f sub y into norm of xn, कौन सा नॉर्म, क्योंकि LP में है xn तो p to power norm, तो अगर ये p to power norm है this is equal to norm of fy, फिर मैं ले सकता हूँ summation k runs from 1 to n 1 to infinity sorry x k n, तो इसकी कंपोनेंट्स हैं रेज पावर p होल रेज पावर 1 by p, जो ना p to norm की डेफिनेशन है, लेकिन इसमें तो खाली एज आई सेड ओनली n टर्म्स हैं, so that would be summation k runs from 1 to n yk, should I write it like this, yk raised to power क्या मिलना चाहिए मुझे, just a minute, y sub k xnp should be equal to, जो ना xnk कैसे डिफाइंड है, इट इज एक्चुअली raised to power q divided by yk, xnk की डेफिनेशन, ओके, रेज पर एन नहीं नहीं इसको ऐसे करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा फिर, राइट, दिस इज एक्स इन के, आई थिंक यही है, हाँ यही है, मैंने इसको डिफाइन कैसे किया, ठीक है यही है, नाउ देयर इज होल रेज्ड पावर p, हाँ ये ध्यान में रखना, होल रेज्ड पावर 1 बाय, आई थिंक दिस इज व्हाट इट शुड बी, हाँ बिल्कुल सही है, सो दैट वुड बी नॉर्म ऑफ एफ वाई, तुम देखना ये इसकी डेफिनेशन यही है, और बाकी तो n के बाद तो ये जीरो है एक्स एन, so that would be summation k runs from 1 to n, now mod है तो दोनों को mod आ जाएगा, so it should be actually yk raised power q divided by mod of yq, so that would be q minus 1 whole raised to power p this whole raised power 1 by p, यही है इसमें थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन जो मैंने कहा था,
but that would be equal to summation k runs from 1 to n. I can write it pq minus p whole raised power 1 by p. A small p है. Okay, now I am going to use that 1 by p plus 1 by q is equal to 1. So that would mean that what does that mean? That means p into q is equal to p plus q. That means p minus p is equal to q. है ना? तो ये जो है p q, it is actually q. So that would be norm of fy into summation k runs from 1 to n yk raised to power q whole raised power 1 by p. तो ये था हमारा मेन काम. So it implies that अब मैं लेकिन ये किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड मेरा f y at xn is by direct evaluation is equal to this. So it implies that summation k runs from 1 to n mod k raised to power q is less than equal to norm fy into summation modulus of yk raised to power q whole raised power 1 by p. I runs from k runs from 1 to n. अब मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूँ ये नंबर जो यहाँ पे है और ये जो यहाँ पे ब्रैकेट पे है ये सेम. तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं ये बन जाएगा होल रेज नीचे रेज पावर 1 by p. ऊपर ले जाएंगे यानी मैं इसको लिख सकता हूँ summation k runs from 1 to n yk raised to power q into summation k runs from 1 to n y sub k raised to power q whole raised power minus 1 by p is less than equal to norm of fy. You agree with me? क्योंकि आ जाएगा डिवीजन में. डिवीजन का मतलब ये जो पावर था इधर वो नेगेटिव है. नाउ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड. तो इसका मतलब मैं इसको अब मैं यहाँ इसी जगह ये करूंगा नेक्स्ट स्टेप क्योंकि इसका मतलब होगा इसका पावर 1 minus 1 by p. गुड. यानी मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ रेज टू पावर 1 by q. 1 minus 1 by q. लेकिन 1 minus 1 by p तो क्यों के बराबर है ना? So मैं next पे it implies that summation yk raised to power q k runs from 1 to n whole raised power 1 by q is less than equal to norm of f sub y for all n greater than equal to 1. Now letting n approach infinity because n पे कोई condition है नहीं, it would imply that summation k runs from 1 to infinity y sub k raised to power q whole raised power 1 by q is less than equal to norm f y. और चूंकि ये norm है it is a finite number, it implies that पहले तो इसका ये मतलब है कि summation k runs from 1 to infinity yk raised power q is less than infinity. That is उसका मतलब y equal to y1 y2 so on and so forth belongs to LQ and norm of yq जो है यहाँ पे is less than equal to norm f sub y. Let's call this equation 1. तो हम जो चाहते थे ना f belongs to LQ वो हमें मिल गया. Now the next part is यानी हमें क्या मिला for every f belonging to LP star there exists some y चलो मैं y belonging to LQ such that f जिसका नाम हमने दिया था is equal to f so that norm of y q is less than equal to norm of f और जिसको हमने नाम दिया था f sub y. राइट. तो एक तरह से हमें मिल गया कि फॉर एवरीथिंग हियर देयर इज समथिंग हियर. अब हम रिवर्स में जाएंगे जैसा कि इससे पहले किया था और वो ज्यादा इजी होता है. कन्वर्सली लेट y equal to yk k runs from 1 to infinity belong to L sub q. Then what? Then
हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देन अगर मैं डिफाइन कर सकता हूँ एफ वाई सब ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स के वाई के runs from 1 to infinity, right? Right. So where x is equal to x1, x2, so on and so forth belongs to LP is well defined and linear, and of course mod of fy of x is equal to mod of summation k runs from 1 to infinity. एक्चुअली इस वजह से ये लीनियर भी है, वेल डिफाइंड भी इसी से ये होगा क्योंकि ये फाइनाइट होगा, is less than equal to summation mod of xk raised to power p, k runs from 1 to infinity whole raised power 1 by p into summation yk raised power q whole raised power 1 by q, k runs from 1 to infinity. ये है by होल्डर्स इनइक्वालिटी, ऐसा होता है। होल्डर्स इनइक्वालिटी पढ़ी है ना? जी सर, सारी इक्वालिटीज पढ़ी हमने। ये होल्डर इनइक्वालिटी which is the same as norm xp into norm yq. That is, मैं कहूँगा mod of fy of x is less than equal to norm yq into norm xp for all x belonging to LP, which implies that fy is a bounded linear function on LP because ये k है कोई फिक्स्ड नंबर and साथ में चूंकि ये उन नंबर्स का infimum है is less than equal to norm yq. Let's call this second. So therefore there is a one-to-one correspondence, उसी का नाम है bijection. मैं लिखूंगा bijection between LP star and LQ by f sub y goes to y, where fy of x is equal to summation xk yk, k runs from 1 to infinity, x is equal to x1, x2 belongs to LP, and y is equal to y1, y2 belongs to LK. Now define, कुछ नहीं हमें करना, define करना है this capital F from LQ to LP. हाँ, ये मैं भूल ही गया, such that ये हम लिखना भूल ही गए, ये जो है ना ये नॉर्म का, यहाँ लिख लो छोटा सा, by first and second norm of fy is equal to norm yq. ये फर्स्ट लिया था ना इससे पहले, ये वाला, और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे यू विल गेट दिस. ओके, वो कहाँ गया? हाँ, such that f of y in norm is equal to norm of y q, ऐसे. So अगर मैं fq से लेता हूँ lp star पे norm defined by f of y is equal to f sub y, then f is a bijection, a linear bijection such that norm of f of y, ये हम कल डिस्कस कर चुके, बिल्कुल वही सब कुछ, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. Norm of f of this capital F of y is norm of this small f of y, which is equal to norm of yq, and hence LP is isometrically isomorphic to LQ, or I can say LP star is equal to LQ for 1 less than equal to p less than infinity, and
and 1 by p plus 1 by q has to be 1. Okay. सो ये था एलपी डुअल. इसके बाद हमें करना है, हाँ चलो एक होम असाइनमेंट देता हूँ. तुम यू शुड बी एबल टू यू नो C0 all convergent हाँ सर, sequences that go to 0. विच आफ्टर सम. हाँ, तो show that C star dual is equal to L1. एंड इसी से तुम ये भी प्रूव कर सकते हो, इसका डबल भी L1 ही होता है. दैट्स योर होम असाइनमेंट. वैसे अगर तुम्हारे पास पुराने नोट्स हैं तो उसमें आ जाएगा. ओके, अब मैं एक और चीज प्रूव करूंगा, वो ये should I do this? राइट, चलो यही करते हैं. ओके, हाँ ठीक है. हमारा एक रह गया था, मैंने तुम्हें कहा था if x and y are normal linear spaces, then ये जो bxy है is also a कंटिन्यूस normal. नॉर्मल. हाँ सर. और साथ में ये कहा था if y is complete, तो pxy भी कंप्लीट. bxy भी complete. अब इसका जो कन्वर्स है कि अगर bxy complete है, ये भी, ये हमने नहीं किया था, हम करेंगे अगर bxy if b of x is complete तो y भी complete. ठीक है, so that's what we are going to do. so थ्योरम को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, let x and y be normal linear spaces now if bxy is a Banach space, then y is also a Banach space. So let's prove it. मैंने बोला था तब हमारे पास कोड नहीं थे, तो हमने अभी कुछ नहीं किया. जो ना इसमें यूज होगा, जैसे हमें डुअल के बारे में कुछ नहीं पता, अब हम डुअल को यूज करेंगे. ठीक है, so let f belong to x star such that f is not the zero function, it's not the zero operator. यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि कोई x है जिसपे ये जीरो नहीं है. तुम्हें पता है ना, f belongs to x star का मतलब है it's a map from x to k that's linear and continuous. तो ये, so once I did this, I picked this non-zero, oh sorry, not zero, I picked this non-zero operator. So for each y, मैं क्या करूंगा, for each y belonging to y, define piece of y as a map from x to y by ty of x is equal to fx into y. तो ये वेल डिफाइंड मैप है, क्योंकि अगर x है x में तो fx इज अ स्केलर, और y जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, y में, है ना, एंड y बिलोंग्स टू y, तो स्केलर इनटू वेक्टर इनसाइड y, दिस होल जो ये हमने यहाँ लिखा, ये जो है fx into y जो है ये बिलोंग करेगा y में. सो इट इज अ डिफाइंड मैप, है ना. सो इस तरह से है, such that ये लीनियर भी होगा because f is linear, such that ty is linear. नहीं, सीधे such that नहीं, हमने डिफाइन किया, then ty is linear, and अगर मैं इसका नॉर्म देखूं, नॉर्म ऑफ ty into x is nothing but norm of f into x into y. अब चूंकि ये नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी होगा मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई. लेकिन चूंकि ये फंक्शनल है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई.
कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नेक्स्ट पेज पे, I've got t sub y of x in norm is less than equal to norm of f into norm of y into norm of x. Now this is a positive finite number, so therefore it's a bounded map. Yani ty is bounded, which implies that t sub y is a bounded linear map from x to y. So therefore t sub y belongs to bxy. और ये कितने मैप्स हैं? जितने y's हैं, है ना? For all y belonging to y. तो यही हमारा मेन स्टेप है. Now consider this capital F from y to bxy. अब मैं ऐसे कर सकता हूं क्योंकि अगर y इसमें है तो ty इसमें है. I define it as a map. F sub y, F capital Y is equal to t sub y. ठीक है? Once I did this, then norm of ty अगर मैं देखना चाहूं, because it would be by definition supremum over the unit ball, that is norm x equal to 1, norm of t sub y applied to x, but that would be equal to supremum over norm x equal to 1. It is norm of f at x into y, which would be less than equal to no supremum norm of f into norm of x. वैसे मैं यूज कर सकता सीधे into norm of y, where norm of x is equal to 1, which is the same thing as norm of f into norm of y. So I have got what? Norm of t sub y is less than equal to norm of f into norm of y. Okay, now I come to my thing. तो मुझे दिखाना है y is complete. ठीक है, ये मुझे दिखाना है. तो मैं कॉशी सीक्वेंस लूंगा और फिर उसके जरिए से एक दिखाऊंगा कि वो कन्वर्जेंट है इनसाइड वो. So let yn be a Cauchy sequence in y. मुझे दिखाना है it will converge inside y. So then अगर y exist करता है तो उसका भाई t sub y भी exist करता है bxy. Then norm of t of yn minus t of ym would be less than equal to norm of f into yn minus ym. तो अगर ये जीरो जाएगा, which goes to zero as nm approaches infinity, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा. मैंने इसको यूज किया हाँ कि दिस इज ट्रू, तो उससे ये ट्रू हो जाएगा. तो which implies that t sub yn is a Cauchy sequence in, of course, it belongs to bxy. Once I've done that, and by our assumption, and bxy is complete, which implies that therefore there must exist some operator, bounded linear operator from x to y such that t sub yn जो है, it goes to s as n approaches infinity. ठीक है? Now let x naught belong to x such that f of x naught is equal to 1. ये मैं कर सकता हूं. देखो f is not 0 है ना, so there exists some x such that f of x is not equal to 0. और ये x जो है ये नॉन जीरो होगा. तो x जो है x cannot be 0. Why? Because a linear map sends 0 to 0. तो उसका मतलब if I take x by norm x और इसका नाम मैं दूं x नॉट, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं करूंगा मैं लूंगा x by fx.
एक्स नॉट का अगर मैं ये नाम दूं देन एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, क्योंकि ये स्केलर है ये बाहर आ जाएगा, तो आई कैन डू दिस. सो दिस इज जस्ट 1 बिकॉज इट इज 1 बाय एफ एक्स बाहर, क्योंकि वो स्केलर थे, और ये हो जाएगा 1. सो आई कैन फाइंड दिस एक्स नॉट. तो हमने एक एक्स नॉट ऐसा लिया बिकॉज एफ इज नॉट आइडेंटिकली 0, आई कैन सेंड दिस एक्स नॉट टू 1 एंड लेट वाई नॉट, कोर्स वाई नॉट जो है S जो है इट्स अ मैप फ्रॉम x to y, तो इस y नॉट बी द इमेज ऑफ x नॉट अंडर S. ठीक है, देन अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे. नॉर्म ऑफ yn माइनस y, शुड आई राइट इट y नॉट? हाँ, मैंने इसका नाम y नॉट रखा तो यहाँ भी y नॉट ही रखा. ये बराबर है, let me write it as norm of y naught minus yn, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं, एक्चुअली मुझे पहले ही ऐसे लिखना था, doesn't matter, ये दोनों बराबर है. So it would be s of x naught because y naught is s of x naught, right? Minus f of x naught is 1, तो अगर मैं 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That would be equal to, by our definition this would be sx naught, और ये जो definition है ty की, so this is actually t sub yn at x naught. And using the fact that जो हमारा ये है point wise operations, because ये भी bounded linear map है, ये भी bounded linear map है from x to y, so it would be s minus t sub yn into applied to x naught. और चूंकि ये bounded linear map है, it's a vector space, अगर s and t y n is a bounded linear map of x and y, so is their difference. So this would be less than equal to s minus dy sub n into norm of x naught, which is a fixed vector. और चूंकि ये जो है yn है ये कन्वर्ज करता है s को, तो ये जो है this would converge to 0 as n approaches infinity, which implies that yn, of course ये belong करेगा y में, y, because s is a map from x to y, s of x naught belongs to y, so yn converges to some y naught belonging to y, which implies that y is complete. And we are done. तो हमने दिखा दिया वो कंप्लीट है. अब इसमें 1.5 मिनट है. हाँ, तुम्हें कुछ पूछना है? How many are there? नहीं सर 2 बजे वेबिनार है और एचओडी बोल रहे हैं कि वो जरूरी अटेंड करना है सबको. नहीं, आज हम एक ही क्लास लेंगे. ठीक है आज हम एक ही लेंगे, क्योंकि ये पहले ही लेट हो गया ना, मैंने बोला ना लाइट नहीं थी, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई. जी सर 15. चलो ओके, इसको बंद करते हैं. वैसे भी ये अभी बंद हो ही जाएगा. 1 मिनट 16 सेकंड. ओके, खुदा हाफिज. कल हम देखेंगे आगे. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.